why, collusion takes place, why there is a collusive oligopoly, right? How do certain firms, they pose a threat to others that they cannot enter the market, or how should firms, they should make pricing decisions when the demand or the cost conditions are changing and new competitors are entering the market. So to answer all of these several questions, we can make use of game theory. All right. And this game theory will help us to analyze a strategic decision making policy. And within the game theory, I will check if the bidding and auction is a part of your syllabus. Then we are going to check over those strategies as well. The question arises is that what is gaming and what is strategic decision making all about? Why are we talking about it? So game, you all know, is a situation where the players or the participants, they are making certain decisions which will take into account the actions and responses of other players as well. जब आप लूडो खेलते हो आप क्या करते हो, आप चेस खेलते हो आप क्या करते हो, अपना मूव चलने से पहले दूसरे के मूव को कैलकुलेट करते हो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर हम मार्केटिंग में भी हम यही करते हैं। जब हम गेम्स का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम उन कंपीटिंग फर्म्स को लेंगे जो प्राइस सेट करना चाहती हैं, लेकिन अपना प्राइस सेट करने से पहले they are going to see what the other person is doing and how the consumer will bid against one another at an auction for a work of art. All right, so strategic decision का मतलब है it will always result in a payoff to the player. All right, the outcomes that generate rewards or benefit to the consumer, all that will be a part of the strategic decision. जो price setting firms हैं, ठीक है, उनके लिए the payoff या जो भी profit है, that will be dependent upon वो consumer का कितना surplus अपने कब्जे में कर सकते हैं. So जब हम गेम की बात करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जहां प्लेयर्स हैं जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाते हैं, और ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि कैसे द अदर पीपल एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज विल बी रिकॉर्डेड. और राइट, पे ऑफ का मतलब है जो वैल्यू एसोसिएटेड है किसी भी पॉसिबल आउटकम की. स्ट्रैटेजी आपको पता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन कोई रूल या प्लान जो आप गेम खेलने से पहले या गेम के दौरान बनाते हैं. तो और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वो होती है जो जो मैक्सिमाइज करती है किसी भी प्लेयर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. गेम थियरी जो है एक स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन की तरफ, it is just hinting at a strategic interaction which takes place amongst the oligopolistic firms. Game theory approach is making use of a mathematical technique that how the oligopoly firms, they will play this game of business, right? The first systematic attempt in this field was given by or made by, I have already talked to you about two people, Newman and Morgeston. Now, Newman and Morgeston were the people who first of all gave the concept of the game theory. Uske baad, of course, Martin Shubik also came up, and he regarded and he said that the most prominent proponent of the game theory approach was given by these two people, and he supported their cause, and he said that the only hope that we can exercise oligopoly in the right direction is via the game theory, right? Uske baad, whatever these three people have given, not much has been contributed in this area. All right, but its usefulness that does not mean that it is useless. Its usefulness is 100% taken care of. It is not denied. So presently, we are going to give just an overall view what the game theory is, where does it apply in oligopoly, and how the decisions are taken under the game theory. The first thing that we talk about in the game theory is what is the problem of the oligopolist. What kind of problem are these people facing? All right, and the problem that is being faced by the oligopolists is the prisoner's dilemma, right? The nature of the problem which the oligopoly firm always face is best explained by the term called
prisoner dilemma, and hence the game theory that is Newman and Morgeston, they have given this entire concept of prisoner dilemma, they have termed it as prisoner dilemma game. अब prisoner dilemma game जो है, यहाँ पर we are going to assume कि दो लोग हैं, two bookies हैं, one is A and one is B. They are, involved in, both of them in, they are involved in an illegal activity, और वो illegal activity कुछ भी हो सकती है, probably they are fixing a match or something like that. तो CBI को एक टिप मिलती है और वो क्या करता है, the CBI arrests both A and B on the suspicion कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, ठीक है। वो अरेस्ट हो जाते हैं और उनको अलग अलग जेल में डाल दिया जाता है, और जब उनको अलग अलग जेल में डाला जाता है तो उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू मेक एनी कम्युनिकेशन, बोथ ऑफ देम। उनको अलग अलग जो सीबीआई है इंटेरोगेट करती है, ठीक है। और जब उनकी इंटेरोगेशन हो रही होती है तो क्योंकि वो अलग अलग जेल में है, आइसोलेशन में है, उनको ये कुछ कंडीशंस जो है पुलिस देती है। पहली कंडीशन देती है कि अगर ए को बोलती है, अगर यू आर गोइंग टू कन्फेस योर इन्वॉल्वमेंट इन मैच फिक्सिंग, ठीक है, तो तेरे को 5 साल की जेल होगी। अगर तूने डिनाई किया कि तू इन्वॉल्व नहीं था और तुम्हें तेरा पार्टनर भी डिनाई कर देता है, तो तुम दोनों बिना किसी एविडेंस के सेट फ्री हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर तेरा पार्टनर कन्फेस नहीं करता है और तू कन्फेस कर लेता है, ठीक है, देन तेरे को 2 साल की सजा मिलेगी और तेरे पार्टनर को 10 साल की सजा मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो 5 साल की सजा मिलेगी। अगर सिर्फ तू कन्फेस कर रहा है और तेरा पार्टनर नहीं कन्फेस कर रहा, राइट, तो तेरे को 2 साल और उसको 10 साल, राइट। और अगर तू डिनाई कर देता और तेरा पार्टनर भी डिनाई कर देता, तो तुम दोनों को हम सेट, यू विल बी सेट फ्री। अब इस कंडीशंस के अंदर हर सस्पेक्ट के पास 2 ऑप्शंस हैं, कन्फेस करना और कन्फेस ना करना। ए और बी के पास डिलेमा है कि वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कन्फेस करें या ना करें, ठीक है। इस डिसीजन को लेने के लिए उनके पास एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जेल का टर्म जो है मिनिमम जो है वो कर सके। अब इस ऑब्जेक्टिव के साथ द ऑप्शन इज वेरी वेरी सिंपल कि दोनों के दोनों डिनाई कर दें तो वो सेट फ्री हो जाएंगे और उनका कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि मैच फिक्सिंग के खिलाफ उनके पास कोई डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो दोनों छूट जाएंगे। लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि एक डिनाई करेगा, अदर नहीं डिनाई करेगा। एक डिनाई करेगा, अदर कन्फेस कर लेगा। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग जेल में हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ए और बी क्योंकि दोनों क्रिमिनल्स हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते। ऑलराइट, एक सिर्फ होप कर सकता है कि अगर मैंने डिनाई कर दिया, ठीक है, तो दूसरा अगर डिनाई ना करे तो क्या होगा, राइट। अगर मैंने डिनाई कर दिया और उसने कन्फेस कर लिया तो उसको तो 2 साल मिलेंगे, मेरे को 10 साल मिलेगा, राइट। इसी तरह से दूसरा भी सोचता है। ये क्योंकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक बहुत ही अनसर्टेन डिसीजन है दोनों के लिए। दोनों इस डिलेमा को फेस कर रहे हैं, दे हैव टू मेक अ चॉइस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए डिनाई कर देता है अपनी इन्वॉल्वमेंट और बी कन्फेस कर देता है, राइट, एंड ही सेज कि हाँ भाई मैं अप्रूवर हूँ, मैंने कर दिया है, तो बी को 2 साल की जेल मिलेगी और ए को 10 साल की जेल मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर ए 10 साल का जेल टर्म अगर उसको मिल रहा है, ऑलराइट, तो इन दिस केस both are struggling with that issue। अगर दोनों कन्फेस कर देते हैं कि हाँ ए और बी दोनों ने कन्फेस किया, तो दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी। तो इस डिलेमा को हम प्रिजनर्स डिलेमा गेम कहते हैं। ऑलराइट, अब द नेचर ऑफ देयर प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो एक टेबल के रूप में हम दिखाते हैं, और उसको हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं हम, और उस पे ऑफ मैट्रिक्स से हम इस प्रॉब्लम को शो कर सकते हैं। सो payoff matrix I am going to make, and you can make that payoff matrix। all right, we have here, I'm just going to make it,
कंप्यूटर की दोनों वर्कशीट्स निकालो. So here, just take it with you. So here we have a payoff matrix. This is the A's option and this is the B's option. All right. And this is when there is a confession and there is a denial. There's a confession and a denial. This is A's confession and denial. This is B's confession and denial. Suppose A is confessing. He gets 2-year jail. All right. And B, if the B confesses, if A and B both are confessing, they get 5-year jail. All right. If A confesses, B does not. A gets 2 years, B gets 10 years. If A does not confess, B confess, A will get 10 years, B will get 2 years. And if they both deny, then they both will get no. They will not get any kind of, what would you say, jail. Have you understood this through the table that I have made? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Right. Now, what is going to happen? They are not allowed to talk to one another. They are in a situation where it is very difficult. What the other person is, दोनों एक दूसरे को कम से कम जेल दिलवाना चाहते हैं. छूटते तो दोनों दोनों चाहते हैं, पर दोनों को पता है वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इट इज क्वाइट लाइकली कि ए बी के ऊपर सस्पेक्ट करेगा, बी ए के ऊपर सस्पेक्ट करेगा, और दोनों अगर कन्फेस करते हैं तो दोनों 10-10 साल की तो ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहेंगे. तो एक सोचेगा अरे अगर उसने कन्फेस कर दिया तो मैं मारा जाऊंगा. ठीक है. और मैंने डिनाई कर दिया. अगर और दूसरा भी यही सोचेगा कि अरे भाई अगर मैंने डिनाई कर दिया और उसने कन्फेस कर लिया तो मैं मारा जाऊंगा. तो 2-2 साल का तो उनको पता है कि बहुत रेयर चांस है. लेकिन 10 साल अगर दोनों के दोनों डिनाई करते हैं, ऑलराइट, तो ही वो फ्री हो जाते हैं. लेकिन अगर दोनों कन्फेस करते हैं, अगर एक सोच ले कि अच्छा ठीक है वो भी कन्फेस कर ले मैं भी कन्फेस कर लूं, तो 10 साल की जेल से तो इन एनी केस जो है ये बहुत कम है. सो 5 years इज much less. So the both confess they would avoid a 10-year imprisonment, और maximum possible jail जो है उनको under the law 5 साल की मिलेगी. So this is the best that they can achieve under the given conditions. Have you understood, everybody? Yes, ma'am. So जो prisoner, Ma'am, what will happen if they both deny? दोनों छूट जाएंगे. दोनों छूट जाएंगे आरुषि. लेकिन डर यहाँ पर ये है कि ए और बी दोनों क्रिमिनल्स हैं. दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली फेथ नहीं करते. किसी एक केस में अगर आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपको इफ यू हैव टू हैव फेथ ऑन somebody else, तो क्या आप उसकी गारंटी ले लोगे आरुषि? नो मैम. हाँ, क्योंकि अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि भाई तू कन्फेस कर लेना अलग से, तो तेरे को 2 साल की होगी, अगर उसने डिनाई कर दिया तो उसको 10 साल की होगी. तो फिर इस केस में तो वो कहेगा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, मेरे को 10 साल नहीं काटने पड़ेंगे, मेरे को 2 साल मिल जाएगा. यू अंडरस्टैंड? ये तो पता है उसको कि अगर मैंने डिनाई कर दिया और अगर उसने कन्फेस कर लिया तो फिर मेरे को 10 साल पड़ जाएंगे और उसको 2 साल पड़ेंगे. हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. तो इस सारे डिलेमा से बचने के लिए the situation arises. अब जो prisoner dilemma है वो एक oligopoly की प्रॉब्लम की ओर डायरेक्ट करता है. यहाँ firms are actually confronted with their within the formulation of their business strategy कि उनको क्या एडवर्टाइजिंग करनी है, कितनी प्राइस कटिंग करनी है, ऑलराइट, कैसे वो कार्टल को चीट कर सकते हैं. So looking at the nature of the problem an oligopoly firm is facing in this case, ठीक है, जब वो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, बेसिक इशू उनके पास आता है कि क्या वो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. ठीक है. अगर वो ये सोचते हैं कि हम नहीं इंक्रीज करेंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं कि क्या राइवल फर्म अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी. अगर वो करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अगर फर्म इंक्रीज एंड इफ द फर्म इंक्रीजेस, ठीक है, then the question that arises कि what will be the reaction of the rival firm? Will they increase or will they not increase? And what will be the payoff if they do not, and what if they do?
सो इफ द राइवल फर्म अगर अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, उसको क्या पे ऑफ मिलेगा, ठीक है। उस सारी कंडीशन में मैं गेन करूंगी या मैं लूज करूंगी। सो फर्म के पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो इनका आंसर जो है उसके पास कोई आंसर नहीं है, अनसर्टेनिटी है। सो इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए फर्म्स जो है अपनी राइवल फर्म्स के एक्शंस, रिएक्शंस, काउंटर रिएक्शंस को एंटिसिपेट करती है और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाती है। Excuse me for a while. So now we are going to apply this game theory to the oligopolistic strategy. अब हम we are going to apply the game theory, right? And the question here is, of course, whether we are going to increase our advertisement expenditure or we are not going to increase our advertisement expenditure. So let's take that there are two companies, all right, company A and company B, and it is a case of a duopoly. There are two firms, they are in a, and they are the only two firms that are providing their services to the consumers, and so there is a presence of a duopoly. And in this duopolistic firm, what is happening, all right, that you have to realize that in all the games, right, you have to anticipate कि आपका जो opponent है वो क्या मूव करेगा, और उसके बाद आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चाहे आप चेस खेल रहे हैं, चाहे आप कैरम खेल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं. सो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी गेम, ऑलराइट, यू विल हैव टू basically anticipate the moves of your opponent, and then you have to formulate your strategy ताकि आप उसके possible move को counter कर सको. ठीक है. सो अब हम जब ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन पे गेम थियरी अप्लाई करते हैं कि हमने अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है या नहीं करना है, तो कंपनी ए को पता करना चाहिए कि कंपनी बी, राइट, उसका पॉसिबल एक्शन क्या होगा, उसका पॉसिबल रिएक्शन क्या होगा. और राइट, तो कंट्री अगर जो राइवल फर्म के जो मूव्स हैं, और राइट, अगर वो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, और राइट, तो उनको बेनिफिट क्या होगा, और राइट, या अगर राइवल का फर्म रिएक्ट नहीं करती है, अगर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती हूँ और राइवल फर्म रिएक्ट नहीं करती है, और राइट, तब व्हाट इज गोइंग टू बी माय पे ऑफ. सो सारा डेटा लेने के बाद कंपनी जो है वो अपना बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेगी, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी बनाएगी, और एंड it will try to capture the largest share of the market, all right, और जो भी best possible strategy होगी इस गेम थियरी में, वो फर्म जो है वो dominant फर्म बन जाएगी with a dominant strategy, all right. dominant strategy वो strategy होती है जो maximum पे ऑफ देगी, maximum benefit देगी एक कंपनी ए को, नो मैटर कंपनी बी या उसकी ओपोनेंट फर्म या राइवल फर्म कोई डिसीजन ले रही है या नहीं ले रही है. सो मेन ऑब्जेक्टिव जो गेम थियरी का है, हम जो इस पूरी स्ट्रैटेजी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इज टू अचीव अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. मैं पहले भी उसकी एग्जाम आपको डेफिनेशन दे चुकी हूँ. उसको हम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं. वो स्ट्रैटेजी जो प्लेयर के एक्सपेक्टेड पे ऑफ को मैक्सिमाइज करती है. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव.
Now we are going to make another payoff matrix, all right, and I'm going to show through this matrix what is going to be the situation, and I am making this on the basis of what we have already done. We have company A's strategy, and we have company B's strategy. So one is going to increase the advertisement expenditure. The other is will not increase advertisement expenditure. Similarly, increase ad expenditure and not increase ad expenditure. So we have so this is what we are portraying. This is the new trade-off that I have in front of me. Now, if company A is deciding to increase its ad expenditure, all right, and company B counter reacts by increasing its own ad expenditure, then A's sale will go up by 20 million here, if you can see, and B's sale will go up by 10 million. ए ने मूव किया है, और राइट, वो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और बी उसको देख के अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है. ए के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से 20 लाख का फायदा हो रहा है, 20 मिलियन उसको मिल रहे हैं, और बी जब काउंटर एक्ट करती है वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उसको 10 मिलियन मिल रहे हैं. ठीक है. अब सपोज कीजिए ए इंक्रीज कर रही है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और बी नहीं कर रहा है, ऑलराइट, देन इन दैट केस, right, there is a gain of 30 million to A and no advantage to B. Can you see that? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So one can similarly find the payoff of the strategy that don't increase in case of both the firms. Now अगर the payoff matrix में अगर हम question arise करता है कि कौन सी strategy A को adopt करनी चाहिए ताकि उसको optimize gain हो, all right, और from the extra ad expenditure that guy is incurring, क्योंकि जो advertisement expenditure वो incur करेगा उस पर भी तो पैसे लगेंगे, तो उसका इस extra payoff क्या मिलेगा, irrespective की B अपना मूव चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो इस payoff matrix से ये clear होता है कि जो A है, it will choose the strategy to increase the ad expenditure because no matter if B is increasing or is not increasing, all right, वो in any case यहाँ पर भी इससे better है. Can you see it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पर भी इससे better है. Can you see it? Yes or no? Right or wrong? Yes, ma'am. So this will become the dominant strategy for company A. Right? A better situation could be that when A increases its expenditure on advertisement, B does not increase it because उसको तब 30 million का फायदा होगा. But there is a greater possibility कि अगर A अपना advertisement expenditure बढ़ाता है तो B certainly increase करेगा, तो भी A को इसमें फायदा है. All right, तो in that anticipation कि B करेगा या नहीं करेगा, उसको ये पता है कि अगर मैं अपना एडवर्टाइजिंग करूंगा, अगर बी काउंटर रिएक्ट भी करेगा तो भी मेरे पास इतना मार्जिन है. सो इन दैट एंटिसिपेशन ऑफ लूजिंग अ पार्ट ऑफ इट्स मार्केट इन फ्यूचर, ऑलराइट, this guy will continue to increase his advertisement expenditure, alright, and hence this concept of a payoff matrix will help him come out of that situation, a dilemma which has not been solved otherwise by the oligopolistic firm, and this comes as a rescue. The payoff matrix comes as a rescue, gives a dominant strategy to the firm. He can make his price and output decisions, he can make his advertisement decisions and still be better off than his rival or
opponent firms. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. All right. Now there is another concept that we are going to do, and that is called the Nash Equilibrium. Right? We have just applied the game theory to oligopolistic market under the assumptions that that's the strategy that you are making is only one time affair. One company is initiating the competitive warfare and the other company is only reacting. All right, there is a dominant strategy and this dominant strategy will give us an optimum solution. But real life में ऐसा नहीं होता. ठीक है, real life is much more complex. There is a continuous warfare. There is a tit for tat behavior. उसने ऐसा कर दिया मैं भी ऐसा करूंगा, अच्छा उसने ऐसा किया अब मैं ऐसा करूंगा. So it's a continuous warfare. So these actions, reactions, counter reactions, ये एक regular phenomena है oligopolistic market के. इस situation में जहां पर there are reactions, there are counter reactions, what is going to be one solution that will come out of this entire situation? What is one solution that we can come out of this entire solution? All right, so dominant strategy सिर्फ और सिर्फ वहां काम करेगी जहां duopoly firms हैं और हमें पता है कि एक dominant strategy मिल गई है और हमें एक optimum solution मिल गया है. चलो ठीक है, जो एक बार reaction show करेगी firm उसके बाद वो चुप कर जाएगी. अब ये जहां पर हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन जो है काउंटर रिएक्शंस एक कॉमन फिनोमिना है, वहां पर डोमिनेंट स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है. और इस तरह की सिचुएशन को एक अमेरिकन मैथमेटिशियन ने नाम दिया था जिसका नाम था जॉन नैश. ऑलराइट, और उसके नाम पे हम ये टेक्निक बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम. सो नैश इक्विलिब्रियम अमेरिकन मैथमेटिशियन के नाम पे हमने प्रपोज किया है. और नैश इक्विलिब्रियम क्या कहता है? नैश इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश करता है ये फैक्ट कि हर कंपनी अपना बेस्ट करेगी. ठीक है, कैसे बेस्ट करेगी? जो भी रिएक्शन कंपनी बी शो करती है, कंपनी ए अपना बेस्ट दिखाएगी. कंपनी ए ने रिएक्ट किया, कंपनी बी अपना बेस्ट करेगी. कंपनी बी ने काउंटर रिएक्ट किया, कंपनी ए अपना बेस्ट करेगी. So it is trying to seek to establish that each company does the best it can given the strategy of its competitors. By definition, अगर हमने Nash equilibrium को define करना, ये एक ऐसी situation है जहां कोई भी player, none of the player payoff को improve कर सकते हैं given the strategy of the rival player. So Nash equilibrium अगर हमने define करना है, और so I can show it with another example with another payoff matrix, and I am going to make that payoff matrix in front of you. Again, I am taking A and B firm. All right, again that duopoly situation, and यहाँ पर जो firms है ये वही रह रही हैं, the things that we did earlier. ठीक है, increase add expenditure, not increase add expenditure. Similarly, increase add expenditure, not increase add expenditure. A, B, A, B, A, B, A, B. Now, in the earlier example, when there was Nash equilibrium not existing, I told you that if A is going to take the decision of increasing its advertisement expenditure, and if B reacts, this is going to be his profit and A's profit is going to be this. And if A, increases his advertisement expenditure, his payoff is going to be this, and B, if he does not increase, his payoff is going to be null. This is case one without the Nash equilibrium. Have you understood, everybody? Yes, ma'am. Right. Now, in this, we under the Nash equilibrium, right, we can see that A के पास कोई dominant strategy नहीं है. ठीक है, वो एक optimum decision बनाता है depending upon B कैसे react करेगा.
अगर बी इंक्रीज करता है अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो सोनी के पास या ए के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, बट वो उसको भी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर ए री एनफोर्स करता है एडवर्टाइजमेंट तो बी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहती, बी को भी अपना जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर अगर ए अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करता, और राइट, अगर बी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करता, और राइट, तो ए जो है वो अपना बेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा देगा। इन कंडीशंस में कंक्लूजन ये निकलती है कि बोथ द कंपनीज दे विल अराइव यू नो at a decision that if this guy is improving or this guy is increasing, all right, this guy is increasing, then his advertisement expenditure, he is getting 10 millions, and if B is going to react, he's going to get 15. If A is increasing, he's going to get 25, and B does not react, he gets 5. So in both the situation, all right, अगर ये कहता है कि मैं इंक्रीज करता हूं और दूसरा भी करता है, तो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। मैं इंक्रीज करता हूं, दूसरा नहीं करता, दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। Similarly, this is going to be other way also. The B and A's reaction is also going to be the same. So under these conditions, the conclusion is that both the companies, they will arrive uh, at this particular phenomena, whether they are supposed to increase or not. If the other company does so and it does not increase, if the competitor does not increase, all right, in the ultimate analysis, they both will decide that it is good that I am going to increase the advertisement expenditure. The reason is, अगर दोनों की दोनों कंपनीज, all right, अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करती हैं, राइट, तो ए जो है, राइट, उसका गेन, इफ यू लुक एट विच इज 25 मिलियन, और बी का सिर्फ 5 मिलियन रह जाएगा। लेकिन अगर ए अपना एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करती है, और राइट, तो उसकी जो सेल है 10 मिलियन से एटलीस्ट बढ़ेगी, राइट। तो बी जो है वो भी क्या करेगा कि अरे इसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ रही है 10 मिलियन से, तो मैं भी एडवर्टाइज करूंगा, तो मेरी जो क्या मेरा मेरा फायदा क्या होगा, और राइट, तो मेरा जो फायदा है वो 10 से कहां पहुंच जाएगा, all right, he says I will be making a benefit of 15. So what will happen, जो B है, B भी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। अगर वो नहीं बढ़ाता है तो उसकी सेल 5 मिलियन रह जाएगी और A की 25 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर A रिएक्ट कर रहा है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, और B भी बढ़ा रहा है, तो B की सेल 15 मिलियन हो जाएगी और A की सेल 10 मिलियन हो जाएगी, राइट। सो द फाइनल कंक्लूजन जो इमर्ज होके आएगा वो ये कि दोनों की दोनों कंपनी इस एडवर्टाइजमेंट वॉर के लिए जाएंगी, ऑलराइट, एंड इन दैट केस ईच कंपनी विल फाइंड आउट व्हाट this best product will win, right? Given, so their reaction is that what the rival company is doing, they will react accordingly, so which is a realistic situation, and this is called the Nash equilibrium. However, there can be situations in which there can be more than one Nash equilibrium, all right, and the firms, for them it will be worthless to engage themselves into an advertisement war, all right, and so there can be various Nash equilibriums. In this case, there can be a strategy कि अगर ये एडवर्टाइज कर रहा है तो ये सिचुएशन ऐसे भी बदल सकती है। आई कैन चेंज दिस सिचुएशन लाइक दिस एज वेल। दिस कैन बी like this as well. There can be another Nash equilibrium that if this guy is advertising, he may have 25 million sales, and this guy, if he reacts, he may get only 5 million. In this case, when this guy is making an advertisement increase and this guy is not reacting, so if he is making a benefit due to advertisement expenditure, this guy, if he is not reacting,
his sales would be limited to 8 million. So there can be two Nash equilibriums. There can be situation A, there can be situation B. So in the end, we can propose that Nash equilibrium may not be a true situation. They may not actually, give you any solution, and hence auctions and bidding come to your aid. Have you understood? Yes or no? Yes, Vite? Yes, ma'am. So this is one proposal of the Nash equilibrium that we actually study under the phenomena of dominant strategy, Nash equilibrium, and so on and so forth. Now, even when this will, uh, you know, Nash equilibrium does not give me any solution. In that case, the mixed strategies come into being. Mixed strategy is in which the player is making a random choice among two or more possible actions based on a set of chosen probabilities. There can be repeated games also, but repeated games are not a part of your syllabus, in which actions are taken and payoff received over and over again. All right. And if repeated position also, repeated games also do not give you any kind of benefit, then sequential games come into being. All right. And then the bidding and the auction comes into being. All that is not a part of your syllabus. I've just recently opened, and they are not a part of your syllabus. So the bargaining strategy and all that, which comes as a part of your Nash equilibrium, is not discussed in your syllabus. So with that, we come to an end of your question or your syllabus of Unit 2. That is, we have talked about what is, just give me a second.